Hi everyone, welcome to Rodha. In today's video, we'll be discussing few questions of percentages here. But before we get into the discussion, I am here to announce the launch of our MH-CET 2025 batch. This batch is starting on 6th January, as you guys can see on the screen, this batch will be taken by me. So I'll be taking quants and reasoning in this particular batch here. And we are planning to give you interactive live classes as written, and along with that there will be a lot of recorded lectures also given to you for your support, right? So you'll be getting extensive amount of practice through this course, which will prepare you best for CT, right? Now because you know that CT is an exam जहाँ पे यार अपने को speed चाहिए, ठीक है? Questions are very easy, but it's just that कि speed नहीं हो पाती managed law से, right? So it's like 200 questions which you have to attempt, ठीक है ना? तो we'll figure out different strategies कि हम क्या क्या strategy try कर सकते हैं for attempting 200 questions, right? And I'll guide you कि कैसे कौन सी strategy कहाँ पे किस केस में fit बैठेगी, right? So we'll be discussing all of these things. Obviously we'll be studying the entire curriculum in details. सारे topics cover करेंगे इस 70 days में, okay? And as mentioned, 1000 plus questions for practice will be given to you guys, right? तो ये सब चीज़ें तो डेफिनेटली मिलने ही वाली हैं, ठीक है ना? These are things that will be provided to you along with topic wise tests and 20 mock tests with detailed solutions, right? So these are the things. Now if it is very important for those जिन लोग का अभी तक CAT, CMAT and SNAP अच्छा नहीं गया, sorry not CMAT and MAT, right? So अगर ये एग्जाम्स अच्छे नहीं गए and you cannot afford to take a drop, then MH-CET is a very good exam to attempt because especially for people who are from Maharashtra, right? तो ये बहुत अच्छा एग्जाम अटेम्प्ट करने के लिए because it has really good colleges. Like if I talk about the top colleges through this, so we have JBIMS, then we have Sydenham here, right? Then we have Wellinker here, right? So there are pretty good colleges through JBIMS. Then you have your SIES, right? Then we have Pumba there, right? So these are some good colleges through CET 2000 CET exam, right? MH-CET. So we should look at these colleges, and especially if I talk about JBIMS, it's one of the best colleges in the country here for MBA, right? It is known for its finance, right? So it is pretty well known, and given the location advantage it has, right, it's amazing college, right? So you have to get really good score in attempt of 180 across 180 plus in CT can with a decent accuracy can get you a chance to be a part of this beautiful college here, right? So it's not that you lose hope that CAT didn't go well या फिर उतनी अच्छी preparation नहीं हुई for ZAT, SNAP and MAT, whatever. We still have ample of time for CT, and I think if we put in the right amount of efforts इस एग्जाम के लिए, तो it is pretty much in our reach. इसको crack किया जा सकता है by studying the next 70 days, that is 2 months approximately, है ना? And the timing for this batch is gonna be, I said, 12 to 1:30 p.m. in the noon, okay? So that is the timing that we are gonna keep for this particular batch, that is 12 to 1:30 p.m. And we'll have 1 and a half hour of sessions, that is 90 minutes each session here, and we'll focus a lot on shortcuts and tricks and logical ways of solving questions, how to speed up basically, ठीक है? That is the main crux of the exam जिसमें हमें focus करना है, right? So if you feel that you guys have any queries related to our batches, related to the fee structure is also mentioned here, that is ₹3,999 for this particular course, right? And you guys can reach out to our website for any information that you need, और also let me know in the comment section below अगर कुछ भी आपको help चाहिए इससे related, ठीक है? So hope to see you guys on 6th of January in this fresh batch here, right? Now let's get started with the detailed discussion of few questions here, which is on percentages, right? अब देखो percentages के लिए ना कुछ चीज़ें बहुत important है, so here I'm only solving questions for you guys, but when we study in our batch, so I'll teach you how to use percentage reciprocals beautifully, right? So this is a practice video here, right? This is not a video where I will be teaching you concepts, right? But just to give you an idea, ठीक है? So just to give you an idea, like for example if I say 25%, ठीक है? अब 25% का जो फ्रैक्शनल इक्विवेलेंट होता है वो होता है 1/4, राइट? अब जैसे मान लो मुझे किसी क्वांटिटी को 25% से इंक्रीज करना है, राइट? लेट्स से कोई वैल्यू उसकी ₹100 है कॉस्ट अभी, उसको मुझे 25% से इंक्रीज करना है, तो व्हाट डू वी नॉर्मली डू? हम क्या करते हैं, 100 प्लस 25% of 100, this is what we normally do, right?
दिस इज अ ट्रेडिशनल वे ऑफ डूइंग इट, राइट. अब इसमें से अगर मैं 100 कॉमन ले लूँ तो यहाँ पे आएगा 1 प्लस 25/100, है ना. 1 प्लस 25/100, 25/100 इज बेसिकली 1/4. तो ये क्या आ गया 100 इंटू 1 प्लस 1/4, दैट इज 5/4. तो ये जो 5/4 आता है ना, दिस इज कॉल्ड एज योर मल्टीप्लाइंग फैक्टर, राइट. और इसको हम डायरेक्टली लिख सकते हैं. कैसे लिख सकते हैं? 1/4 होता है 25%. नाउ इफ इट्स अ परसेंटेज इंक्रीज, जैसे यहाँ पे मैं इंक्रीज कर रहा हूँ, राइट, तो न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में ऐड कर दो एंड राइट योर मल्टीप्लाइंग फैक्टर. सो 1 प्लस 4/4 विच इज 5/4. ठीक है ना. सो मल्टीप्लाइंग फैक्टर इज अ इजी कंसेप्ट टू क्रैक. एक बार बस इसको समझ में आना चाहिए कि मल्टीप्लाइंग फैक्टर कैसे कैलकुलेट होता है. ठीक है ना. सो दिस इज हाउ यू कैलकुलेट द मल्टीप्लाइंग फैक्टर एंड विद दिस यू कैन स्किप दीज स्टेप्स, है ना. ये स्टेप तुम स्किप कर सकते हो सारे. यू डोंट हैव टू राइट ऑल दिस. सो दिस इज अ वेरी स्मॉल, बहुत छोटा सा कंसेप्ट था ये. सो वी विल बी लर्निंग अ लॉट ऑफ ब्यूटिफुल कंसेप्ट्स लाइक दीज इन आवर क्लासरूम कोर्स हियर. ठीक है. नाउ लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चंस हियर. It says in a workshop with 80 students and 10 resource persons, sweets were distributed at the end of the workshop. Okay, so their students are 18 number and resource persons are 10 in number, right? Now it says the amount spent for distributing sweets to each student was 30% of the total number of students. Okay, so amount spent here is 30%, right? 30% of 80 is basically, can I say, 24 rupees, right? This is the amount spent ऑन स्वीट्स, है ना. ये स्वीट्स पे स्पेंड किया गया अमाउंट है विच इज 30% ऑफ 80, दैट इज 24 रुपीज, है ना. फर्दर इट सेज एंड द अमाउंट स्पेंड टुवर्ड्स ईच रिसोर्स पर पर्सन, each resource person was 40% of the total number of students. Now 40% of the total number of students will be, I can say, 32 rupees, right? So this is 32 rupees here. All right. Now it says the total amount spent for sweets distribution in the workshop. Now see, you see, just this is the level of question, right? But ये है कि quick होना है, ठीक है ना. Now total amount spent on resource person is 32 into 10, that is 320 rupees, right? And here it will be 24 into 80. So 0 is here. 20 into 80 is 160 and 8 into 4 is 32. You have to do oral calculations, right? So I split this 24 as 20 plus 4 in my mind, है ना. और फिर मैंने क्या किया, 20 into 8 160, 4 into 8 32. 32 plus 160 is 192. So this is 1920, right? Now 1900 plus 300 is 2200 plus 20 and 20 makes it 2240 here. So the amount spent on sweets is definitely option number D here. That is rupees 2240. ठीक है. तो कैलकुलेशन फास्ट करना है, जल्दी करना है, एंड यू हैव टू अंडरस्टैंड ऑल्सो लेंथ ऑफ क्वेश्चंस कैन बी प्रिटी गुड इनफ, लाइक 4 लाइन का क्वेश्चन, 5 लाइन का क्वेश्चन, बट जनरली इट विल बी डूएबल एंड इट विल बी इजी क्वेश्चंस. ठीक है ना. चलो लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 2 हियर. इट सेज इन अ constituency 55% of the total number of voters are male and the rest are females. Okay, एंड इफ 40% ऑफ द मेल्स आर इलिटरेट. ठीक है. अब देखो, समझो गाइज, यहाँ पे बहुत लोग जनरली क्या करते हैं ना, यहाँ पे 55% ऑफ द टोटल वोटर्स आर मेल, तो लोग टोटल वोटर्स को एज्यूम कर लेते हैं 100, है ना. अब 55% आर मेल्स, तो नंबर ऑफ मेल्स कितने हो गए, कैसे 55 हो गए, है ना. अब उसके बाद जैसे ही बोले ना 40% ऑफ द मेल्स आर इलिटरेट, तो व्हेन यू टॉक अबाउट इलिटरेट मेल्स, है ना, इलिटरेट मेल्स, so when you find 40% of 55, this value will end up going to decimals, है ना. ये डेसिमल में आ जाएगी, देखो 5 नहीं, डेसिमल में नहीं. ठीक है, चलो फाइन, दिस वर्क्स. सो नंबर ऑफ इलिटरेट मेल्स आर, आई कैन से 22. अदरवाइज अगर ये डेसिमल में आती ना, तो आई वुड हैव टेकन 1000 वोटर्स है, राइट. आई कुड हैव टेकन 1000 वोटर्स है जस्ट टू अवॉइड डेसिमल. सो ऑलवेज मेक श्योर कि फ्रैक्शन अवॉइड करना है, डेसिमल अवॉइड करना है, राइट. एंड 40% ऑफ द फीमेल्स आर लिटरेट. ओके, 40% ऑफ द फीमेल्स आर लिटरेट. नाउ if males are 55, so can I say the number of females will be 45, remaining 45 because total voters are 100, right? And 40% of the females are literate. So I can say literate females. Now, this is literate females is equal to 40%, right? So 40% of 45, ठीक है. अब now one of the ways solve this, या फिर ऐसे भी सोच सकते हो कि 10% of 45 is 4.5, right? So 40% will be nothing but I can say 4.5 into 4. ठीक है. That is basically I can say 16 and 2. That is, this will come out to be 18. So literate females are 18. ठीक है. Now what is the question asking me? Then by what percentage is the number of illiterate females more than the illiterate males? Okay. So illiterate males are 22 in number. ठीक है. Females literate are 18. Total females are 45. So can I say illiterate females
should be equal to 45 minus 18, right? 45 minus 18, that is basically, I can say 25 and 7 and 20, 27. Okay, 27 females are illiterate. Now the question is asking me by what percentage are the illiterate females more than the illiterate males, right? So illiterate females is 27, illiterate males are 22. So it is 5 more, right? And by what percentage are the illiterate females more than illiterate males? So I'm comparing this with illiterate males, right? So if I'm comparing this with illiterate males, ओके परसेंटेज में याद रखना गाइज, जिससे भी कंपेयर करते हो वो चीज डिनोमिनेटर में जाती है, ठीक है? सो आई एम कंपेयरिंग नंबर ऑफ इलिटरेट फीमेल्स मोर देन इलिटरेट मेल्स, सो इलिटरेट मेल्स इज गोना गो इन द डिनोमिनेटर. सो 5/22 इसका मुझे परसेंटेज फाइंड करना है, राइट? अब जिनको 1/22 पता है वो इजिली 5 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है? मुझे नहीं पता है, कोई बात नहीं. 22 का 10% इज इक्वल टू 2.2, राइट? 10% इज 2.2, सो 20% विल बी 4.4, राइट? 4.4 हो गया, मुझे 0.6 और चाहिए, ठीक है? 0.6 और चाहिए, राइट? एंड कैन आई से 1% is equal to, I can say 0.22, right? So 3% will be approximately 0.66, right? And 4.4 plus 0.66 is approximately a slightly more than, I can say 5, right? Slightly more than 5 हो जाएगा, तो somewhere close to 23% should be my answer, है ना? थोड़ा सा कम, 23% से little lesser. Why? Because if you add this, you'll get nothing but 5.06, but I want a 5 exactly, है ना? तो 23% से this plus this is 23%, so 23% से थोड़ी सी कम वैल्यू चाहिए, isn't it? So my answer should be definitely option number A, that is 22.7%. So this is basically your approximation. हम ये भी पढ़ेंगे, ठीक है? When we do our course, we'll study how to approximate values quickly, क्योंकि ये बहुत काम आने वाला है, ठीक है ना? चलो, alright, let's move to question number 3 here. It says a reduction of 20% in the price of sugar enables a purchaser to obtain 4 kg more for rupees 160. ठीक है? अब देखो, the price of sugar per kg. So this clearly implies, ये क्वेश्चन मुझे इम्प्लाई कर रहा है कि जो एक्सपेंडिचर है वो कांस्टेंट है, ठीक है? अब देखो यहाँ पे ना फॉर्मूला होता है विच इज एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू प्राइस इनटू कंजम्पशन, ठीक है? अब अगर तुम्हारा एक्सपेंडिचर कांस्टेंट है, राइट? इफ दिस इज कांस्टेंट, राइट, तो रिडक्शन इन प्राइस 20% रिडक्शन हो रहा है प्राइस में. अब देखो, मल्टीप्लाइंग फैक्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसीलिए 20% का जो मतलब होता है 20% मीन्स 1/5 इन टर्म्स ऑफ फ्रैक्शन, ठीक है? रिडक्शन हो रहा है तो न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में से सबट्रैक्ट करो टू गेट द मल्टीप्लाइंग फैक्टर. सो 5 - 1 इज 4/5. अब अगर तुम्हारा एक्सपेंडिचर कांस्टेंट है, प्राइस 4/5 हो गया, तो मेरा कंजम्पशन जो है वो 5/4 हो जाएगा, ठीक है? कंजम्पशन विल बिकम 5/4 टाइम्स. वाई? बिकॉज दिस इज कांस्टेंट, है ना? ये कांस्टेंट है, तभी ये और ये कैंसिल होगा और तुम्हें सेम वैल्यू मिल जाएगी जो ऊपर है, राइट? प्राइस इंटू कंजम्पशन, राइट? लेट्स से दिस इज 4/5 टाइम्स ऑफ प्राइस, दिस इज 5/4 टाइम्स ऑफ कंजम्पशन, तो ये कैंसिल होके यू विल गेट द सेम इक्वेशन, दैट इज एक्सपेंडिचर इक्वल टू प्राइस इंटू कंजम्पशन हियर, isn't it? तो ये हमेशा रेसिप्रोकल होता है. जब दो चीजें इक्वल टू के एक साइड पे होती हैं, तो अगर एक चीज मेरी A/B से चेंज हो रही है तो दूसरी मेरी ऑटोमेटिकली B/A से ही चेंज होगी, राइट? अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे पहले बंदा 4 kg कमा रहा था, 4 kg खरीद रहा था, अब 5 kg कंजम्पशन कर रहा है, तो कितना कंजम्पशन उसका बढ़ गया? Exactly 1 kg, right? Numerator is 1 kg more than the denominator, but क्वेश्चन के हिसाब से he is able to obtain 4 kg more. तो रेशियो की वैल्यू के हिसाब से ही इज मेकिंग 1 kg मोर, बट क्वेश्चन के हिसाब से इज मेकिंग 4 kg मोर, राइट? तो यहां पे मेरा जो मल्टीप्लाइंग फैक्टर है वो 4 टाइम्स हो गया. तो 4 टाइम मल्टीप्लाइंग फैक्टर का मतलब है 4 × 4 दैट इज 16 kg एंड 5 × 4 दैट इज 20 kg, है ना? तो अभी वो 16 kg खरीद रहा है, पहले वो अभी वो 20 kg खरीद रहा है, पहले वो 16 kg खरीद पाता था, राइट? बिफोर द इंक्रीज ऑफ द प्राइस. द क्वेश्चन इज आस्किंग द ओरिजिनल प्राइस ऑफ शुगर पर kg. सो 16 kg इज बीइंग बॉट फॉर रुपीज 160, राइट? सो आई कैन से 160 upon 16, दैट इज द कॉस्ट इज रुपीज 10 per kg. सो द आंसर इज ऑप्शन नंबर B है, ठीक है? लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन हियर. It says a student multiplied a number with 3/4 instead of 4/3. What is the error percentage? Okay. अब नंबर यहाँ पे x मानो, है ना? उससे अच्छा क्या है ना, x के टर्म से नहीं जाते हैं. 4 से मल्टीप्लाई, 3/4 से मल्टीप्लाई करना था, बट 4/3 से मल्टीप्लाई कर दिया, राइट? आई वॉन्ट टू अवॉइड दिस फ्रैक्शनल वैल्यू, ठीक है? मुझे डेसिमल्स नहीं चाहिए, तो आई विल टेक अ नंबर विच इज द एलसीएम ऑफ द डिनोमिनेटर्स, दैट इज 4 and 3, है ना? सो आई कैन से एलसीएम
of 4 comma 3, right? LCM of 4 comma 3 is equal to 12 here, right? LCM of 4 comma 3 is equal to 12 है ना. Let's say my number is 12. अगर 12 को 3/4 से मल्टीप्लाई करते हैं, है ना, 12 को अगर 3/4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो I'll get 9 here, है ना. बट अगर मैं 12 को 4/3 से मल्टीप्लाई करूँ तो I'll get 16 here. क्वेश्चन में पूछा है कि उसको मल्टीप्लाई करना था 3/4 से, मल्टीप्लाइड विद 3/4 इंस्टेड ऑफ 4/3. तो एरर कितने का आया? देयर इज अ एरर ऑफ हाउ मच? सो कैन आई से देयर इज अ एरर ऑफ एग्जैक्टली 7, है ना. और एरर परसेंटेज के टर्म्स से कितना होगा? दैट इज व्हाट दे आर आस्किंग मी, राइट. सो एरर इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज इज व्हाट आई एम सपोज टू फाइंड हियर, राइट. So the error in terms of percentage here will be nothing but there's a error of 7 in 16, है ना. Why in 16? क्योंकि पहले 16 जाना था. The value should have been 16 but now it is 9, है ना. अब चाहे तुम x लेते चाहे 12 लेके सॉल्व किया, it doesn't matter ना, परसेंटेज तो सेम ही रहेगा, राइट. सो आई एम नॉट सपोज टू फाइंड एनी एक्चुअल वैल्यू है. सो 7/16 इज द एरर एंड आई वांट टू फाइंड दिस इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज, राइट. सो 7/16 अब देखो अप्रॉक्सीमेटली कितना होगा, राइट. सो कैन आई से कि 16 का जो 10% होता है इज बेसिकली 1.6, है ना. तो 40% कितना होगा? 40% विल बी अप्रॉक्सीमेटली 6.4, राइट. बट मुझे तो 7 तक जाना है तो मुझे 0.6 और चाहिए, राइट. 0.6 और चाहिए. 10% is 1.6, so 5% will be, I can say 0.8 here, है ना. 5% से भी कम चाहिए. So my answer will be in the range of 40 to 45%, है ना. And there's only one option in that range which is 43.75%, है ना. You wouldn't even have to solve this much. You can see all the options are beyond 50%, A and C. एंड तुम्हें ये पता चल गया कि 40% से ग्रेटर देन आंसर आना है, तो दिस इज द ओनली ऑप्शन दैट फिट्स इन, राइट. सो यू हैव टू बी प्रीटी स्मार्ट विद द ऑप्शंस एज वेल. इट्स नॉट नेसेसरी कि हर बार कैलकुलेशन ही करना है, ठीक है. चलो लेट्स मूव अहेड टू द नेक्स्ट वन. अ क्रेट ऑफ फ्रूट्स कंटेन 1 स्पॉइल्ड फ्रूट फॉर एवरी 25 फ्रूट. सो हर 25 में देयर इज 1 स्पॉइल्ड फ्रूट. ओके, देयर इज 1 स्पॉइल्ड फ्रूट हियर. नाउ 60% ऑफ द स्पॉइल्ड फ्रूट्स वर सोल्ड. ओके, if seller had sold 48 spoiled fruits, so 60% of the spoiled fruits, that is let's say SF, ठीक है, is equal to 48, right. The total spoiled fruit, well let's say SF, so 60% of them were sold and that is going to mean 48. So number of spoiled fruits is equal to, can I say 48 into 100/60, है ना. Now this is basically 6 8 is 48, so 80 spoiled fruits were there in total. And the question is asking what is the total number of fruits in the crate. Now 80 spoiled fruits are there and for every 25 there's 1 spoiled fruit. So there are 80 spoiled fruits. So can I say in that case total fruits should be equal to 25 into 80, right. And 25 into 80 is how much? I can say 0, 8 5s are 40. Should end in a double zero. Okay, all the options are ending in double zero. No worries. So 4 carry 8 4s are 16, 4 20, 2000. So answer is option number A here, right. That is my required answer. Let's move ahead to the next one. If each edge of a cube is increased by 10%, then the percentage increase in its surface area is. Okay. Now understand here that surface area, for this question, the first thing that you need to know is the surface area of a cube. The formula, right? So surface area of cube is basically equal to 6 into side square, right? I can write it as 6 into A here, right. Now this value is increased by 10%, ठीक है. तो 10% in terms of fraction is 1/10. So अगर increase कर रहे हैं तो can I say my multiplying factor will be 11/10. So if I'm finding the new surface area, can I say this will become 11/10 times the original, and because of this also it will become 11/10 times because there are two sides and both of them are increased by 10%. So I can say 11/10 into 11/10, isn't it? Now this value will come out to be nothing but 6 into 121/100. And there's a A square as well because this is 11/10A, 11/10A, so I can write A square. So can I say this has become 121/100 into 6A square, ठीक है ना. So this 6A square is nothing but my original surface area and 121/100 times is the new surface area. The question is asking me what is the percentage increase. So can I say there's an increase of 21%. 121/100 means 21% more, right. So that is my required answer, ठीक है. Another way to do this is, है ना, अगर ये नहीं करना चाहो, you want it to be pretty quick और जल्दी करना है, तो 2 successive percentage changes calculated by A plus B plus AB by 100, ठीक है ना. This is the formula for 2 successive percentage change here,
right? So I can say 2 successive percentage change. This is the formula, a plus b plus ab by 100. So here there's a 2 successive change of 10 and 10%. Why? Because each edge is increased by 10%. और surface area के formula में exactly 2 edges use होते हैं, ठीक है? So I can say 10 plus 10 plus 10 into 10 by 100. So 20 plus 1, that is 21%. So this is a easier way than this. इसमें थोड़ा सा calculation दिख रहा है, थोड़ा confusion भी हो सकता है लोगों को, but this is a easier method. But definitely you need to know that in the formula of surface area of cube, this is 2 edges here, ठीक है? चलो, let's move ahead to the last question for today. It says in a school 4% of the students did not appear for the annual exams, ठीक है? 4% did not appear, मतलब 96% students ने appear किया, right? 10% of the students who appeared for the exam could not pass the exam. So 90% have passed the exam, right? This is pass and this is appear. Okay. And 50% got distinction. Okay. 430 students passed the exam but could not get distinction. Up passed the exam but could not get distinction. So can I say first they have to appear, then they'll pass, and they could not get distinction. So if 50% got distinction, so can I say remaining 50% did not get the distinction here? Right? And if there are initially x students, I can say x into 96 by 100 into 90 by 100 into 50 by 100 is basically 1 by 2, right? This is equal to 432 students. This is what has been given to me. So from here the value of x will be nothing but I can say 432 into 100 into 100 into 2 upon 96 into 90, right? This is gone, right? Now, one thing for sure that this has to get cancelled because the number of students cannot be a decimal value, right? So I can say this is 2 ones are 48 times, okay? 12 fours is 48, 12 threes is 36, 7 72, 12 6 is 72. 4 into 9 is 36, 36 and 36 is gone from here. So the value of x is basically 1000. So there are 1000 students in the class, right? The number of students in the school is 1000. That is option number B here. So calculations, tables and squares, cubes, these are some things that should be on your fingertips if you really want to crack an exam like CET here. So you'll be doing all these things. We'll be doing a lot of speed maths as well. So hope to see you guys on 6th of January. Thank you.